The last time I think we were discussing springs, right? स्प्रिंग हमने डिस्कस किया था. सही है ना, स्प्रिंग डिस्कस किया था ना, वही तो बता दो, यस नो. हो गया था ना स्प्रिंग. हाँ कटिंग, हाँ हाँ हाँ, कट द स्प्रिंग और कट द स्ट्रिंग हम कर रहे थे. So today we are going to talk about, this is the last topic in Newton's laws. So we are going to talk about inertial and जोर से बोलो, जोर से तो मैं बोल रहा हूँ माइक के पास में. Increase the volume. हाँ, I hope अब आवाज आएगी अच्छी. So we are going to talk about inertial and non-inertial frames of reference. So what do I mean by a frame of reference? याद है बहुत पहले काइनेमैटिक शुरू कर रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था what is a frame of reference. Frame of reference is, अगर हम लेमैन्स टर्म्स में बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट ए point of view of a person, right? So मैं जोर से ही बोल रहा हूँ रजत, इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता हूँ, माइक पे हाथ नहीं रख सकता. So a frame of reference is simply put is a point of view. So point of view का क्या मतलब हुआ? I told you, I think in the very first class, that physics is all about observation. And what we want to do is we want to observe things and we want to spot patterns, whether whatever we are observing is following some pattern, right? And this pattern we usually write in mathematical equation form and we call them laws of physics. So, what do we mean by observation? What do we mean by we are observing something? So, the universe is made up of various particles. And when I say that we are observing, what I mean is that we are looking at the position of the particle and we are measuring the position of the particle. And if the particle's position is changing with time, then we are capable of measuring this change of position and we are capable of measuring the time in which this change is taking place. Of course, when I say position, then we are slowly now going from the world of words to the world of maths. So when I say position, what I mean is position vector. And when I say position vector, what I mean is xi cap plus yj cap plus zk cap. And xi cap plus yj cap plus zk cap is nothing but the x, y, and z coordinates of the particle taken from a certain origin. Right? So in this case, the origin is the observer. Wherever the observer is, that is the origin.
and the observer has constructed for the purpose of mathematical measurement the x, y, and z axis. Okay? And the observer has, अगर अगर आवाज कम आ रही है कुछ लोगों को log out and then log back in because most of the people they are hearing the normal voice. So the observer is going to construct this XYZ axis, which is going to enable him or her to measure position or to measure or to designate a coordinate to every point in space. And the observer also has a stopwatch which will enable the observer to measure intervals of time. Please remember that this is something that is uh, this is something that is not necessary uh, to live your life. इसका मतलब क्या है कि अगर हम if we talk about an animal, let's say, so if we talk about a cheetah, then you have all seen videos where a cheetah is hunting a deer. How does the cheetah hunt deer? First, the cheetah will come very, very slowly, try to hide itself, try not to be detected, and it will then locate its prey. बोलेगा नहीं ये आज तो मैं यही यही हिरन को मारना है मुझे खाना है. उसके बाद से जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाएगा तो डियर will start to run. So this guy will start to chase, right? And while running, the deer will change its direction. This guy will also change its direction. Ultimately, uh, most of the times, it will go and catch the deer and kill it and eat it. Now, the cheetah is not going to say, that I'm going to construct the XYZ axis और deer का जो है position vector ये है और समय के साथ उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे चेंज हो गया तो मैं भी अपना पोजीशन वेक्टर ऐसे चेंज कर. So this is something that the concept of frame of reference is something that we have invented and we can study the world in a mathematical way using this concept of frame of reference. अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और उधर से गाड़ी आ रही है, you should not do that by the way. अगर गाड़ी आ रही है वहां से और आप रोड क्रॉस कर रहे हो, right? So your brain is actually very nicely calculating the position of the vehicle that is coming, how the position is changing with time, and therefore your brain makes a decision whether you can cross the road, before the vehicle is going to come to your position. And most of the times, this calculation is very, very nice. Sometimes, of course, this calculation goes bad, and that is how accidents happen. That is why you should never do this actually. So, a frame of reference is nothing but a three-dimensional coordinate axis with a stopwatch with a time measuring device. However, it is more than that. Okay, mathematically, तो इतना ही है, but physically, it is more than that. It is the point of view of the observer. Observer को क्या दिखाई दे रहा है. So we have a frame of reference here. I will just draw the axis like this, and I will say that look, this is the frame of reference. This is the frame of reference, and I will give it a name. I will call it S1. It is some observer S1, and then this is the frame of reference of some other observer. Let's call it S2.
अब ये दोनों क्या कर रहे हैं कि ये एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, ये रहा पार्टिकल। तो जब S1 ऑब्जर्व करेगा तो बोलेगा देखो ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, लेकिन जब S2 ऑब्जर्व करेगा तो बोलेगा नहीं ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल। So I will say that this is the position vector of the particle with respect to S1, and I will say that this is the position vector of the particle with respect to S2, right? Now, it may be, it may happen, the situation may be that this guy S2 is moving. ऐसा भी हो सकता है। तो अगर S2 मूव कर रहा है तो उसको ये पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देगा। Remember that S2 is the observer, right? तो S2 मूव कर रहा है ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। I am an observer who is beyond S1 and S2. I'm like God looking down on these two guys. And अगर S2 मूव कर रहा है तो अगर S2 मूव कर रहा है तो S2 के हिसाब से S2 is not moving, right? I think we have had this discussion when we were doing relative velocity. So according to S2, S2 is not moving, but according to me, if S2 is moving, then particle with respect to S2 will be moving backwards. So what I'm trying to say is that different observers will observe or may observe different motion of the same particle, right? So in this case, S1 will say, the observer at S1 will say that the particle is stationary, and the observer at S2 will say that the particle is moving. Now, if S1 is stationary and S2 is moving with a velocity which is constant, right? This is a velocity vector which is constant. So if S2 is moving with a velocity vector which is constant, then these two frames of references are called inertial frames of reference. So this is an inertial frame. What is an inertial frame? An inertial, I will tell you a better definition in a moment. But for us, an inertial frame is a frame which is either stationary or moving with constant velocity. Right? So inertial frame is a frame, let me not write frame, is stationary or it is moving, but very important, it is moving with constant velocity. Okay, so this is the understanding that you should have. अब मैं जो ऊपर की चीजें बताऊंगा वो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हो, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको याद रखना है, ये समझना है। अगर मैंने फ्यूचर में कभी भी ये टर्म यूज किया इनर्शियल फ्रेम, इसका मतलब कि मैं एक ऐसे ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ जो या तो स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, मैं बोलूंगा ये ऑब्जर्वर इनर्शियल है, इसका मतलब कि वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, this is the gist, this is the thing that you have to remember, this is the thing that you have to understand today. I am introducing a new word, that is
inertial frame, inertial observer. And whenever I say this in the future, I will assume that you will understand the meaning of this as the observer is stationary or moving with constant velocity. क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ पे हमें? What is the question that we should immediately ask? What is the question that we should immediately ask? What is the question that we should immediately ask? नहीं जोएब ना, क्या हुआ भैया, सब लोग भूल गए क्या कैसे टाइप करते हैं? नहीं नहीं, नॉट एक्सेलरेटिंग, नहीं अभी एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ an inertial observer is an observer who is stationary or moving with constant velocity. Therefore, what is the question we should ask? What is the question immediately you should ask? अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नहीं इतना हाई फाई नहीं सोचना है, बिल्कुल बेसिक सोचना है। क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको मुझसे करनी पड़ेगी ना। When does he stop? नहीं भाई, you'll have to cross question. What is my statement? Listen to my statement. The observer is stationary or the observer is moving with constant velocity. क्या पूछना चाहिए इमीडिएटली, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? नहीं भाई, ना 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 ना, नो नो, नहीं नहीं, रेस्ट में कब आएगा नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है नहीं होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ना ना, नहीं 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 नहीं, बेसिक ना। अरे क्या 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 लिख रहा है भाई ये सब? नहीं 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 नहीं, आप लोग को यू हैव टू थिंक more clearly. The moment I say that the observer is, अगर वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी में बोल रहा हूँ तो फिर मैं मैग्नीट्यूड और वो दोनों बता रहा हूँ ना। अगर मैंने आपसे बोला that the observer is stationary or the observer is moving with constant velocity, then immediately you should ask with respect to what? ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, माना ऑब्जर्वर स्टेशनरी, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑब्जर्वर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो रिलेटिव वेलोसिटी बोला था, इसका क्या मतलब है? नहीं 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 नहीं, ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है या नहीं है ये हमें मालूम है। As far as we are concerned, it may be that these two observers are the only things in their respective universe. तो ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, एक स्टेशनरी है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एंड दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ देम ऑल जो मैं पूछ रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एन इनर्शियल फ्रेम is a frame of reference which is stationary or moving with constant velocity with respect to what? नहीं,
Okay, so I will now try to define inertial frame of reference. ये सारी चीजें आप याद रखो नहीं रखो does not matter, but I want to explain, so I'm explaining. Inertial frame of reference. So listen to what I'm saying, try to absorb, try to understand. लेकिन जो हमें याद रखना है वो ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, राइट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी मैं बोलूंगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर जब भी मैं बोलूंगा, इसका मतलब वो स्टेशनरी है या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो inertial frame of reference is a frame of reference in which Newton's laws work. अब इसका क्या मतलब हुआ? This is very weird statement. न्यूटन लॉज तो हर जगह काम करते हैं, ये क्या नाटक है? तभी तो लॉ है वो कि वो काम करता है। What do you mean by this? A frame of reference inertial है जहाँ पे न्यूटन लॉज वर्क कर रहे हैं, that means that every frame of reference is inertial. So what are Newton's laws? Newton's laws tell us that हाँ हाँ मेरे स्टेटमेंट का बिल्कुल यही मतलब है राधिका. Yes, 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 good. So Radhika is saying that non-inertial frame of reference में Newton's laws नहीं काम करेंगे. Yes, मेरा मतलब यही है. Inertial frame of reference में Newton's laws काम करते हैं. Non-inertial frame of reference में Newton's laws काम नहीं करते हैं. Okay? So the thing that should be there in your mind is ये क्या बकवास, ये क्या नाटक, क्या हो रहा है? क्योंकि अगर न्यूटन्स लॉज हमने बोला तो लॉ का मतलब है कि भाई वो तो हर जगह काम करेगा. व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो द थिंग इज दैट न्यूटन्स लॉज है क्या? क्या न्यूटन्स लॉज इज F is equal to ma? Is that a correct statement or incomplete statement or a complete statement? अगर मुझसे कोई पूछे न्यूटन्स लॉज क्या हैं और मैं बोलूं F is equal to ma, is that correct or is that incorrect? Is it complete or is it incomplete? It is incomplete because Newton gave three laws, right? First, second, and third. And I told you that the first law is the most important law. And the first law tells us that a system will experience a force if there are other objects in the surrounding of the system. And if the system is isolated in space, that means that if the system is somewhere out there between two galaxies or between some point in space where there are no masses, nothing is there. So such a system will be isolated for all practical purposes, and therefore the net force on such a system will be zero. And therefore, such a system will always maintain its state of rest or velocity. That means that if it is at rest, it will always remain at rest, and if it is moving with some velocity, it will keep on moving with that particular velocity. So the first law of Newton tells us that केवल only the objects in the surrounding are capable of applying a force on the system, right? Second law tells us that if such a force is applied, then the acceleration of the particle will be given by this force divided by mass of the particle. And the third law tells us that if this object applies a force on the system, then the system
will react, system will apply an equal and opposite force on this object. Okay? These are the three laws of Newton. If one of these laws fails, then of course we are going to say that Newton's laws have failed. Right? So what do I mean by Newton's laws work and Newton's laws do not work? I specifically mean that the first law works and the first law fails. So the first law tells me that only objects in the surrounding are capable of applying a force on me. So I throw a ball in the air. When I throw a ball in the air, I will say that look, once the ball leaves my hand, then the only force acting on the ball is the gravity of the earth. Right? We are now back on the earth. We are back on the surface of the earth. So if I throw a ball, then on the surface of the earth, once the ball leaves my hand, then the only force acting on the ball is the gravity of the earth, right? And we are in this ideal world of ours जहाँ पे कोई air नहीं है, कोई air resistance नहीं है, जो अर्थ का ग्रेविटी है वो परफेक्ट है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो बॉल ने मेरा हाथ छोड़ा और अब उसके ऊपर केवल ग्रेविटी काम कर रही है. जब बॉल ने मेरा हाथ छोड़ा तो मेरे को उसकी वेलोसिटी मालूम थी, मालूम है, और मेरे को उसका एक्सेलरेशन मालूम है क्योंकि मैंने सेकेंड लॉ से वर्कआउट किया. अगर बॉल के ऊपर एम जी फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है तो एम जी इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ यूज किया मैंने, और उससे मेरे पास आया ए इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स. सेकेंड लॉ से मैंने एक्सेलरेशन निकाला बॉल का, वेलोसिटी बॉल की मेरे को पहले से पता है, और अब मेरे सामने प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स याद आने चाहिए और मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ. तो बेसिकली आई कैन टेल यू वेरी एग्जैक्टली इन दिस आइडियल वर्ल्ड where the ball is going to land, how long is it going to be in air, uh, how high is it going to go. I can tell you the velocity of the ball at every point. I can tell you all the points that the ball will cross. Right? I can tell you everything, almost everything about the ball. This is the situation where we say that Newton's laws work. Using Newton's laws, I make a prediction, and this prediction is seen to be true when I carry out the experiment. Newton's laws work. Okay? Now, imagine that we are all sitting inside a bus. Now, ये थोड़ा सा cliched example है, आपने बहुत बार सुना है, but still. We are all sitting inside a bus. Okay? And please don't imagine the normal अपना bus जो होती है. I'm not talking about that. I'm talking about the ideal world wala bus. And this ideal world wala bus is ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज अपने आप से आ रही है. ये देखो अभिजीत, पता नहीं क्या कर रहा है तू. म्यूट कर अपने आप को. So we are talking about the ideal bus, and in this ideal bus where we are sitting, we cannot see anything that is outside. Okay, बाहर की हमें कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, सब ब्लैक विंडोज लगा के रखी हैं. और जब बस मूव करेगी तो हमें बाहर से कोई आवाज नहीं आएगी. बस जब मूव करेगी तो हमें कोई जो रोड है और जो व्हील्स हैं वो अल्ट्रा स्मूथ है, और
This means is that there is no way to know ये बस मूव कर रही है नहीं कर रही है. हम अंदर बैठ के हमारी दुनिया बस वही है बस के अंदर. हमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कोई झटका नहीं लगेगा, कुछ नहीं. Okay, now we are all sitting inside the bus, right? And I am holding in my hand a yo-yo. सबको मालूम है ना यो-यो क्या होता है. So this is the bus. This is the bus. We are all sitting inside the bus. And in my hand, हाथ बनाने की जरूरत ही नहीं है. I am holding a yo-yo. I'm not moving it about. Okay, this is very important. I'm not moving it about. And I've just held it vertically. कभी किसी ने बिल्डिंग बनते देखा है? कभी किसी ने प्लम बॉब मालूम है क्या होता है? किसी ने जब 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 मेसन ब्रिक्स ले करता है, when a mason is laying bricks, yeah, then किसी ने देखा? Has anybody seen brick laying? देखा है किसी ने? मुंबई में रह के आई डोंट थिंक किसी ने देखा होगा. देखा है. नहीं नहीं, बबल वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं धनुष. हाँ, although that is also. हाँ. So when the good. So many of you have seen it, right? So if you have not seen it, you can see it on YouTube. जब वो ब्रिक ले करता है ना मेसन, तो उसके पास एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है, रस्सी के साथ बंधा होता है, और एक हेवी मेटालिक कॉनिकल चीज होती है उसके रस्सी के एंड पे ना. ये हैवी मेटालिक कॉनिकल चीज होती है. वो क्या करेगा कि जब वो ब्रिक ले करेगा ना, when the guy lays the brick, तो ये वाला एज जो है ना ब्रिक का, ये वाला एज ब्रिक का, he will try to align with this string, and unless it is perfectly aligned, he will not move on to the next brick. Can you guess why? The brick laying mason will align this edge of the brick with the string. Why? Because he wants the brick to be perfectly horizontal and vertical, and he knows that this string is perfectly vertical. ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है. ये इसको प्लम बॉब बोलते हैं या सिर्फ बॉब बोलते हैं. तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो उसको मालूम है कि ये जो स्ट्रिंग है ये परफेक्टली वर्टिकल है, राइट? और ये एज जो ब्रिक का है, he wants this to be perfectly vertical. अदरवाइज क्या होएगा? ब्रिक पता चला ऐसे, हाँ ब्रिक ऐसे ले कर दिया उसने, अब तो काम ही खत्म हो गया. अब आप बोलोगे नहीं वो तो देख के इतना टेढ़ा कोई थोड़ी ना ब्रिक ले करेगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा, जो कि हमें पता नहीं चल रहा है, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा बन जाएगा. यस. So therefore, the yo-yo that I'm holding, or the bob that I'm holding, is perfectly vertical, right? Inside the bus, it is perfectly vertical. डायरेक्टली ब्रिक लगाते देखा है तो गलत है, उसको रोक बिल्डिंग गई. तो ये बस के अंदर, हम वापस अब बस के अंदर आ गए हैं.
ये बस के अंदर जो मैंने यो होल्ड करके रखा है या जो प्लम बॉब होल्ड करके रखा है, उसकी जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली वर्टिकल है, राइट? एंड वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल सिटिंग इनसाइड द बस, वी आर ऑल चैटिंग, and I am holding this yo-yo in my hand or this bob in my hand, and the string we can all see is perfectly vertical. Now the bus moves forward with an acceleration of a. Yeah, this is very important. It moves with an acceleration of a. Acceleration, not constant velocity. Moves with an acceleration of a. Now we cannot see the driver. We cannot see outside. We cannot see anything. There is no नॉइज हमें पता चले कि बस एक्सेलरेट कर रही है, कुछ नहीं हमें पता चल रहा, राइट? तो फिर ये बॉब के साथ क्या होएगा? बॉब के साथ क्या होएगा? व्हाट विल हैपन टू द बॉब? व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रिंग? व्हाट विल हैपन टू हाँ, यस यस यस, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है ना? यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हैं? Everybody is agreeing up till this point. Okay, now let's review what has happened. Okay, let's try to picturize in our heads. We are all sitting inside this bus, perfectly neat, clean, soundless bus. और मैं आई डोंट नो, मे बी आपकी क्लास में ले रहा हूँ, और मेरे हाथ में ये थ्रेड से कनेक्टेड एक ऑब्जेक्ट है, और ये परफेक्टली वर्टिकल है, होना भी चाहिए, right? We are discussing Newton's laws of motion. So I ask, what are the objects in the surrounding of this bob that you see? What are the objects in the surrounding of the bob that you see? I'm holding this in my hand, okay, and I ask the question, what are the objects in the surrounding of the bob that you see? What are the answers? क्या है? What are the objects in the surrounding of the bob? क्या दिखाई दे रहा है हमें? हाँ, स्ट्रिंग हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कांटेक्ट में होएगा वो तो स्ट्रिंग होएगा, स्प्रिंग होएगा, एक्सटर्नल एजेंट होएगा, और नॉर्मल रिएक्शन होएगा, सरफेस होएगा। लेकिन एक चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती है, राइट? बट वो होती है ना वहां पे, वी नो दैट, राइट? नॉट पीपल, नो। In the ideal world, we don't consider people, right? There can only be 5 objects in the surrounding of the system. That is earth, surface, spring, and external agent. So what are the objects in the surrounding of the wall that you see? It will be only 2 objects, right? हमने किया हुआ है ना अभी, अर्थ एंड स्ट्रिंग। एक अर्थ होएगा और एक स्ट्रिंग होएगा। अर्थ हमें ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थ बस के बाहर है, बट हमें मालूम है हम अर्थ के ऊपर है। हमें मालूम है कि ये जो बस है ये अर्थ के सरफेस पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें दिखाई देगा अर्थ और हमें दिखाई देगा स्ट्रिंग। अब अर्थ की वजह से क्या फोर्स होती है भाई? राइट, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, और मैंने पूछा अर्थ की वजह से क्या फोर्स होती है, तो mg फोर्स होती है, और mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होती है, राइट? इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आ गया mg वाला फोर्स, ये mg का फोर्स होता है। और दूसरी फोर्स क्या लग रही है? ऑफ कोर्स स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, तो ये टेंशन फोर्स लग रही है इसके। एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी, यस यस, दिस इज। नाउ द बस एक्सेलरेट्स, and when the bus accelerates, the pendulum or the bob has gone back, move कर गया वो। कौन सी फोर्स लगी बॉब के ऊपर?
अगर ये बॉब मूव कर गया, हम अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, हमारी क्लासरूम बस के अंदर, मैं आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, आपने बोला कि इसके सराउंडिंग में, बॉब के सराउंडिंग में अर्थ है और स्ट्रिंग है। अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा रही है। मैंने ये बॉब अपने हाथ में पकड़ के रखा है, अचानक से ये बॉब टेढ़ा हो गया, अचानक से ये स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई। The bob moves from this vertical position to this new red position. Now, the bus that we are sitting in, remember, was ideal. We can't see outside. We don't know. We are moving by visual cues. The bus is soundless. We don't know that the bus has accelerated because of sound. किसी ने एक्सीलरेटर दबाया और जो है वो इंजन जो है रेव कर रहा है और हमें सुनाई दे रहा है. No, the bus is perfectly smooth. That means that हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बस गड्ढे में गई या नहीं गई. परफेक्टली स्मूथ रोड. लेकिन मेरे हाथ में जो बॉब है वो तो टेढ़ा हो गया. देन आई आस्क व्हाट इज दिस, ये कैसे, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. has an object in the surrounding changed? Answer my question, yes or no. Has any object in the surrounding changed? Then according to the first law, can the force on the object change? हाँ भाई ऋषिक, क्या ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सराउंडिंग में, बताओ. यस यस मनीष. ऋषिक, व्हाट ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग हैज चेंज्ड? योयो. क्या योयो? तो आई डोंट नो, वी हैव एक्सेलरेटेड द बस नाउ. डायरेक्शन ऑफ फोर्स हैज चेंज्ड? क्या बोल रहे हो? आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Sitting inside the bus, do you see any other object appear in the surrounding of the yo-yo? Sitting inside the bus, आपको क्या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अपीयर हो गया? हाँ yes, that is it. Nothing has changed, right? Nothing has changed. तो अब इस टेढ़े ये जो रेड वाला बॉब है, इसके ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो तो mg है और टेंशन T है इधर. अभी why are you bothered about बाकी, मतलब I can't understand. Does this have any bearing on the question that I'm asking? कि बाकी लोग जो है पीछे हो जाएंगे और लोग आगे, किसी को उल्टी आने लग जाएगी. सर एक को तो उल्टी आ रही है, तो क्या, आई मीन आर वी डिस्कसिंग फिजिक्स देन? वी आर नहीं ना. तो be focused on what I'm saying. Be focused on the problem at hand. मैं किस लॉजिकल चीज को पकड़ा हुआ हूं, उसको आप पकड़ने की कोशिश करो. I am saying that the force acting on an object is only caused by an object in the surrounding. When the bus was not accelerated, the objects in the surrounding were earth and string. And when the bus is accelerated, the objects in the surrounding are still earth and string.
Now I know that the force due to the earth must be vertical. Therefore, the tension in the string must be vertical. Because मेरे को बॉब का एक्सेलरेशन तो जीरो दिखाई दे रहा है. अब जब बस एक्सेलरेट करती है तो ये बॉब पीछे जाता है. ये बॉब जो पीछे जा रहा है, this is a breakdown of Newton's first law, right? And even if we want to talk about the people in the bus, supposing that there is a guy standing on the bus, ठीक है, ये रहा, ये लो, ये लो, ये आदमी यहाँ पे ऐसे है बेचारा. अब ये आदमी के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं भाई? ये आदमी के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं बताओ? ये आदमी के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं? बॉब स्ट्रिंग नहीं है सोनल. अर्थ है और सरफेस है. केवल 5 चीजें हो सकती हैं सराउंडिंग में. Only 5 things can be there in the surrounding: earth, surface, string, spring, और एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, तो इस आदमी के सराउंडिंग में क्या क्या है? एक तो अर्थ है, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन. हाँ, सो ये आदमी के सराउंडिंग में सरफेस है जो वर्टिकल फोर्स लगा सकता है, और ये आदमी के सराउंडिंग में अर्थ है जो वर्टिकल फोर्स लगा सकता है. अब अगर बस एक्सेलरेट करेगी तो ये आदमी के साथ क्या होएगा? व्हाट विल हैपन टू दिस पर्सन, राइट? यू हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस इज नॉट. सो आई एम अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं आइडियल वर्ल्ड आपके मन में थोप रहा हूँ with your experience of the unideal world. But unideal world, maybe you have seen when the bus accelerates forward, you experience a push backwards, right? तो ये आदमी का एक्सेलरेशन किधर होएगा? ये आदमी का एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ हो जाएगा. This guy will, when the bus accelerates forward, this guy will accelerate backwards like this. So which force is responsible for the acceleration of this guy? As far as this guy is concerned, or as far as we are concerned sitting inside the bus, we have no explanation. Okay? There is अर्थ की वजह से mg नीचे लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा हुआ है, और ये बंदा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है. ये धक्का किसने दिया? अब रिस्पॉन्सिबल कुछ भी हो, अब इन इनर्शिया क्या होता है तेरे को मालूम नहीं है, right? Let's not go into this. Let's not use words which we are not familiar with. Let's stick to what we know. We know that the first law tells us
that objects in the surrounding will be responsible for force on a system. And in this situation, the force on the system can only exist vertically. Yet, despite this fact, as seen by observers inside this bus, as seen by us inside this bus, this person has a horizontal acceleration despite only having vertical forces acting on the person. This is a breakdown of the first law of Newton, and therefore we say that these guys जिनके लिए ये breakdown हो गया, these guys are non-inertial observers. And what is so special about non-inertial observers? Non-inertial observers always observe a force which is not due to any object in the surrounding. Non-inertial observers observe a force which is due to, which is not attributed to any object in the surrounding. And therefore this force is called an imaginary force, or it is called a pseudo force. So this guy, ये वाला जो बंदा है, इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन में, वर्टिकल फोर्स लगाया mg ने, और कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में नहीं है, लेकिन इसके इसका जो एक्सेलरेशन है ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स भी होनी चाहिए, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सराउंडिंग में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा सके. So we will say that this is acceleration due to an imaginary force. हाँ, अब क्वेश्चन पूछो जो पूछना है, या कुछ समझ में नहीं आया. Sir, is that is similar to the situation when a person is falling down in a lift. It will also be non-inertial. Exactly, yes, it will be non-inertial. Is this centrifugal force? No, it is not. No. Centrifugal force is when we deal with circular motion. Okay? This is not centrifugal force. Can you repeat what were non-inertial observers? Non-inertial observers are observers who are accelerated, are observers who are moving with acceleration. Sir, for it to be inertial, it should be at rest or constant velocity with respect to ground. हाँ, good Zoheb, मैं आ रहा हूँ. I'm just coming to this. Yeah, I'm just coming to this. Okay, so I'm going to rub all this out. Okay, yeah, I will not rub this out. But I want to keep this thing separate. So inertial frames of reference are where Newton's laws work, and non-inertial frames are where Newton's first law breaks down. It does not really break down, but it does not work, so it is the same thing. And I can come back here now and I can say that a non-inertial frame is which is
accelerated. ठीक है? A non-inertial frame is a frame which is accelerated. Inertial frame is a frame which is stationary or moving with constant velocity. Now, again, if I make this statement, what is the first question you should ask? If I make this statement, what is the first question you should ask? With respect to what? Yes, good. So, stationary with respect to what? Moving with constant velocity with respect to what? And accelerated with respect to what? The answer is a bit weird, but I'll make it easy in the end. एक minute, just a minute. So the answer is very weird. Okay, so please get ready for the answer. You and me, right now, are we inertial observers or non-inertial observers? You and I, we are inertial observers or non-inertial observers? Socho, are we accelerated or not? Think about it. Are we accelerated or not? Right? And I will repeat a story which I have already told you many times before, and I will tell it to you again today. We have a friend who is an astronaut. You know, he is above the surface of the earth. Oh, ऊपर है space में. तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? What is the kind of motion that this guy will see for us? What is the motion that the astronaut above the earth will see? What is the motion that the astronaut above the earth will see for us? It will be circular motion, right? हम गोल गोल घूम रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट? नाउ जो एस्ट्रोनॉट ऊपर है अर्थ के, वो बोलता है देखो देखो मैं स्टेशनरी हूं, तुम मूव कर रहे हो, तुम एक्सेलरेटेड हो. बट वी हैव अनदर फ्रेंड who is outside the solar system. Okay, who is outside the solar system. So for that guy, okay, let's number the observers. The observer on the earth is 1. The observer outside the earth is 2, and the observer outside the solar system is 3. तो 1 हम लोग हैं अर्थ पे बैठे हुए हैं. तो हमने बोला, मैंने पूछा हम इनर्शियल हैं कि नहीं, तो सबने बोला हाँ हम इनर्शियल हैं. क्यों? क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है, हम तो स्टेशनरी है. लेकिन जब 2 के रिस्पेक्ट में पूछा गया कि हम स्टेशनरी हैं कि नहीं, तो 2 ने क्या आंसर दिया? व्हाट डज 2 आंसर? We are stationary, we are moving with constant velocity, or we are accelerated. Remember that 1 is us sitting on the surface of the earth. 2 is the person above the earth, the astronaut above the earth. 3 is the person outside the solar system. तो जब 2 से पूछा गया कि ऑब्जर्वर 1 का मोशन कैसा है, तो 2 क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर 1 तो गोल गोल घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है. ऑब्जर्वर 2 बोलेगा लेकिन मैं तो स्टेशनरी हूँ जी, मेरे को तो दिखाई दे रहा है, मैं तो स्टेशनरी हूँ. फिर जो ऑब्जर्वर 3 है वो क्या बोलेगा? जो ऑब्जर्वर 3 है, द गाय हु इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम, व्हाट विल ही से? क्या बोलेगा? वो बोलेगा ऑब्जर्वर 2 गोल गोल घूम रहा है, और ऑब्जर्वर 1 तो पता नहीं कैसे गोल गोल घूम रहा है. वो तो अपनी एक एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, दूसरी एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहा है, राइट?
तो ऑब्जर्वर 3 के लिए ऑब्जर्वर 1 का मोशन तो बहुत ही गंदा होने वाला है। ऑब्जर्वर 3 के लिए ऑब्जर्वर 1 का मोशन तो कुछ ऐसा होने वाला है, भाई तू ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, तू ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, जलेबी बना रहा है। Now we have an observer 4 who is outside the galaxy, right? Remember that the Milky Way galaxy is also moving round and round, right? And I think we discussed the time period. It is 220 million years to go एक गोल चक्कर का टाइम है ये अर्थ के लिए, सन के लिए। तो अगर एक ऑब्जर्वर आउटसाइड द गैलेक्सी है जिसको हम बोलेंगे भाई ये ऑब्जर्वर नंबर 4 है, तो ये जो ऑब्जर्वर नंबर 4 है ये बोलेगा ऑब्जर्वर नंबर 3 गोल गोल घूम रहा है। What about observer number 4? Is observer number 4 stationary? Is this guy stationary outside the Milky Way? No, no. It turns out that there is something called a local group, and this local group of galaxies, lots of galaxies, they are all moving. अब एक दूसरे के अराउंड गोल चक्कर मार रहे हैं। ऑब्जर्वर 5 ये लोकल ग्रुप के बाहर है, ये बोलेगा 4 जो है वो गोल गोल घूम रहा है। Yes, I hope you are realizing. I hope that yeah, exactly. Very good. That is the conclusion that I want you to arrive at. What Radhika has said. No one is absolutely stationary. There is no one in this universe who is absolutely stationary. But that brings us to a very weird conclusion, right? And ऐसा होना नहीं चाहिए, but that brings us to a very weird conclusion. What is that conclusion? If nobody is really absolutely stationary, that means inertial frames of reference. Yes, good, Abhijit. That means inertial frames of reference do not exist, and that means Newton's laws do not work. सब गोल हो गया, सब गायब हो गया। चलो अब घर चलते हैं, बहुत हुआ। नहीं, घर पे तो ऑलरेडी हैं। so so what is happening? क्या है ये? Do Newton's laws work? If they don't work, what is? It turns out that this is the question that Einstein wanted to answer. This is the question that made Einstein think more and more, and he then came up in 1905 with the theory of relativity, theory of special relativity. And theory of special relativity is basically two sentences. वो E is equal to mc square वगैरह जो आप पढ़ते हो, that is not theory of relativity. It is a mathematical derivation that is coming from the theory of relativity, but it is not the theory itself. The theory itself is just two sentences. The first sentence is that uh, inertial frames, in inertial frames, uh, laws of physics will work. In all inertial frames, laws of physics will work. Laws of physics work equally in all inertial frames. That is the first statement of Newton, of Einstein. Sorry. And inertial frames may inertial frame, as I have just explained to you, is something that does not exist, or it can exist. I don't know. Somewhere in space, somewhere far away from all galaxies, maybe there is an inertial frame of reference. So what we are going to do is this.
we are going to say, we are going to say that although we know, although we know that inertial frame अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, but we will say that frames of reference, frames of reference on surface of earth are by definition inertial. Okay, right? So what we are going to say, what we are going to say is that look, I know that inertial frames really do not exist, or they exist somewhere where they really do not exist for us. So what I am going to say is कि अगर inertial frames exist नहीं करते हैं तो Newton's laws हमारे लिए नहीं काम करेंगे. That is true. That is okay. However, if I were to throw a ball, right? Supposing मैं अभी 10th फ्लोर पे हूँ और मैंने बॉल फेंका यहाँ से, तो जो मोशन होएगा बॉल का within certain limits, I can predict the motion of the ball using Newton's laws. Therefore, I can say that for all practical purposes, Newton's laws work perfectly for me on the surface of the earth. In fact, I can predict जो भी हमने टेक्नोलॉजी आज तक डेवलप करी है, that is based on the prediction of Newton's laws, right? Especially something like the space shuttle, for example. So in the 1980s, the US used to launch space shuttles. अभी SpaceX launch करता है shuttle. रशिया से launch होता है सोयूज shuttle. तो ये सारे जो स्पेस क्राफ्ट हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं स्पेस में जाने के लिए, सब हम न्यूटन्स लॉ से वर्कआउट कर लेते हैं कि उसको कितना वेलोसिटी देना चाहिए, उसको कितना क्या करना चाहिए, कितना फ्यूल लगेगा. Everything is worked out based on Newton's laws. So Newton's laws, they work very nicely on the surface of the earth. It is only when you start talking about huge distances and huge velocities that uh, things will become uh, the things will become uh, they will not be governed by Newton's laws. But जो हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटी हो रही है, मैंने बॉल फेंका, मेरे को जानना है वो किधर जाएगा, गाड़ी चल रही है कैसे चलेगी, रॉकेट लॉन्च हो रहा है वो किधर जाएगा, ये सब न्यूटन्स लॉ से वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी सब कुछ वर्कआउट कर जाता है. So by definition, we will say that the frame of reference of the earth is inertial. तो अगर कोई अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, अगर कोई अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाएगा. अगर कोई अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाएगा. Right? Okay. So, having talked big things, I now come back to what you need to remember. अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में एक बॉडी स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे ये बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर. और अगर हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है, या ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल. दोनों स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल.
अभी सबको समझ में आ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट लेना है. ये सब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट. हाँ, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन के आंसर जो आप पूछ रहे हो. जनरल डाउट दैट pseudo force was discovered after NLM is not a part of. क्या बोल रहा है ये? सब NLM का पार्ट है. Everything is a part of NLM. Okay, so if we have an inertial frame, right? Then we draw FBD, apply F is equal to MA, apply constraint if required, find acceleration. What do we do in non-inertial frames? So we draw FBD. We apply F is equal to MA. Apply constraint if required. Find acceleration. स्टेप्स तो सब सेम लग रहा है, लेकिन यहां पे एक एडिशन हो जाएगा. So in FBD, there will be one imaginary force. Okay, or pseudo force. So what is the difference between an inertial observer and a non-inertial observer? The difference is that when the non-inertial observers, नहीं, वन से ज्यादा भी हो सकता है, हमारे लिए वन है, ठीक है ना, हमारे लिए वन. इसको मैं स्टार लिख दे रहा हूँ, हमारे लिए वन ही रहेगा, बट वन से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रहेगा. So the difference between an inertial observer and a non-inertial observer is that when the non-inertial observer begins to apply the Newton's laws, then the non-inertial observer has to have on his or her FBD a force which has got nothing to do with objects in the surrounding. And this one force will be the pseudo force, will be the imaginary force. The moment the non-inertial observer adds this pseudo force or imaginary force in his FBD, right, that's it. Everything becomes the same again. Everything works out again. F is equal to MA works out again. So the only thing that we have to remember is this. हमें क्या याद रखना है, ये देखिए. Please put all your attention here now. So the magnitude of the pseudo force, just like मैंने आपको बाकी forces का magnitude और direction बताया था, उसी तरीके से मैं आपको आज इसका magnitude और direction बताऊंगा. Magnitude of the pseudo force is equal to mass of the system
जिसका आप एफबीडी बना रहे हो, जिसका नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एफबीडी बना रहा है, multiplied by the acceleration of the frame of reference. Frame of reference. Right? ये किसके रिस्पेक्ट में होएगा, ये याद रखना है. This will be with respect to the and the direction of the pseudo force will be minus the direction of the frame of reference. ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है. तो जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एफबीडी बनाएगा, इनर्शियल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एफबीडी बनाएगा तो वो अपनी एफबीडी में ये एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करेगा एंड दिस विल बी हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जिसके लिए एफबीडी बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय acceleration of the frame of reference. That means acceleration of that observer who is drawing the FBD with respect to the earth, and the direction of this force will be opposite to the direction of the frame of reference. So now I can go back to this guy, okay, and now I can say that the forces acting on him are N ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और ma लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन ये एफबीडी किसने बनाया? Who has made this FBD? You have to be very clear about this. So this FBD is made by an observer inside the bus. What about the observer outside the bus? उसको क्या दिखाई देगा? What about the observer outside the bus? उसको क्या दिखाई देगा? नहीं, अगर एक ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस है तो उसको क्या दिखाई देगा? ये रहा हमारा बस. This is the guy inside the bus. This is the observer outside the bus. This is the observer inside the bus. Observer 1, observer 2, and this is the system. So please answer some of my questions. Observer 2, inertial or non-inertial? Observer 2, inertial or non-inertial? Observer 1, inertial or non-inertial? Observer 1, inertial or non-inertial? FBD according to observer 2, mgn. FBD according to observer 1, FBD according to observer 1, mgn ma. ये डिफरेंस है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स. जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसके लिए केवल वही फोर्सेस एक्ट करेंगी जो सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से लगी है, और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए एग्जैक्टली वही फोर्सेस एक्ट करेंगी, बट एक फोर्स ऐड हो जाएगी विच इज द इमेजिनरी. नाउ next question. Acceleration as seen by observer 1, observer 2, and acceleration as seen by observer 1.
Very good, Advait. Yes. Acceleration as seen by observer 2 will be 0. Acceleration as seen by observer 2 will be 0. यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Acceleration as seen by observer 2 will be 0. Actually हो ये रहा है कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम के नीचे जो आदमी है, जहां मैंने सिस्टम लिखा है उसके नीचे जो आदमी है, हाँ, ऑब्जर्वर टू स्टेशनरी, जहां मैंने सिस्टम के नीचे आदमी बनाया है, जब ये बस एक्सेलरेट करेगी तो ये आदमी मूव नहीं करेगा. यही इनर्शिया है जो आप इस लेक्चर के शुरुआत में लोग बोल रहे थे, इनर्शिया इनर्शिया. दिस इज इनर्शिया. द मैन will not move. Okay? The man will not move. The bus, however, will move आगे की तरफ. And when the bus moves, okay, when the bus moves forward and the man does not move, man inside the bus does not move. I'm not talking about observer 1, okay? Observer 1 is moving with the bus. That is why observer 1 is non-inertial. ऑब्जर्वर 1 बस के अंदर बैठा हुआ है, सीट के ऊपर है, तो जब बस मूव करेगी तो ऑब्जर्वर 1 भी मूव करेगा. लेकिन ये वाला जो आदमी है, ये जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, ये नहीं मूव कर रहा. तो ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखाई देगा? लेट्स फॉरगेट अबाउट शैडो फोर्सेस, लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. अगर ये आदमी मूव ही नहीं कर रहा है और ये बस आगे चल रही है, तो ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखाई देगा? ऑब्जर्वर 1 को दिखाई देगा कि वो आदमी पीछे जा रहा है. That the explanation of that is pseudo force. In reality, nothing is happening. In reality, वो आदमी वहीं का वहीं है और ऑब्जर्वर 1 आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको लगता है कि वो आदमी पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. That's it. So according to this, नहीं, सिस्टम नहीं मूव करेगा ना राधिका. That's the whole point. With respect to observer 2, the acceleration of the system will be 0. And with respect to observer 1, the acceleration of the system will be minus a. With respect to observer 2, the acceleration of the system will be 0. With respect to observer 1, the acceleration of the system will be minus a. Okay? तो आप देखो, ऑब्जर्वर 2 के लिए, हाँ, सिस्टम ये मैन है, हाँ. ऑब्जर्वर 2 के लिए तो कोई चीज चेंज ही नहीं हुई. इट इज जस्ट लाइक अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड. लेकिन ऑब्जर्वर 1 के लिए एक एडिशनल फोर्स आ गया है में, जिसकी वजह से एक एडिशनल एक्सेलरेशन आ गया, माइनस है. एंड बिफोर वी गो, आई जस्ट वांट टू क्विकली शो यू वन क्वेश्चन and how to apply this concept of pseudo forces. So we had done this question before. हाँ, ऑब्जर्वर 2 के लिए बस मूविंग है. हाँ, बिल्कुल मूविंग. ऑब्जर्वर 2 के लिए बस मूविंग है. यस यस. ऑब्जर्वर 2 के लिए बस मूविंग है, लेकिन ये आदमी मूविंग नहीं है. ये आदमी स्टेशनरी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है. ऊपर नॉर्मल लगा है, नीचे एमजी लगा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता. ऑब्जर्वर 2 इनर्शियल है, रिमेंबर. इसके लिए वही फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के सिस्टम के ऊपर क्या फोर्सेस क्रिएट करी? नॉर्मल रिएक्शन और एमजी. अब इन फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो
ऑब्जर्वर 2 के लिए ये आदमी जो सिस्टम है स्टेशनरी रहे, बस आगे मूव करते हैं। सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली हाउ दिस इज अप्लाइड। रिमेंबर ये प्रॉब्लम हमने किया था, तो इसमें जो है कंस्ट्रेंट्स आ जा रहे थे विच वाज मेकिंग द प्रॉब्लम टफ। नाउ लुक हाउ टू डू दिस। I know that the acceleration of this will be a horizontal. Okay, I know that the wedge will accelerate horizontally. Now what I do is I imagine that there is a person sitting on the wedge. So this person that I have drawn on the wedge, is that person inertial or non-inertial? Is that person an inertial observer or a non-inertial observer? जो मैंने बंदा बना दिया वेज के ऊपर, वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? वो नॉन इनर्शियल, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट आई डू इज दैट आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द वेज with respect to observer on the ground. वेज के लिए जो मैं एफबीडी बना रहा हूँ, ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। नीचे mg लगेगा, यहाँ पे सॉरी बना दिया, फ्लोर की वजह से कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन n डैश लगेगा, n1 लिख दिया मैंने, और जो सरफेस ऑफ m है उसकी वजह से कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। FBD of block with respect to observer on the wedge. Please notice that I am drawing two FBDs, but these two FBDs are being drawn by two different observers. The FBD of the wedge is being drawn by an observer on the ground, and FBD of the block is being drawn by an observer on the wedge. तो जो ऑब्जर्वर ऑन द वेज है वो बोलेगा यार इसके ऊपर तो एक mg फोर्स लगा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है, और एक स्यूडो फोर्स भी लगा। Because remember that the person on the wedge is non-inertial. So for this guy, the pseudo force, let me use a different color. For this guy, the pseudo force will be like this. This is the extra force. Because observer on the wedge is non-inertial. चलो अब मेरे को बताओ, वापस से आते हैं ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। इसका तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वेज का, तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेता हूं, और अब इसको रिजॉल्व कर देते हैं। n cos थीटा आएगा यहाँ पे n sin थीटा आएगा। तो क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं वेज के लिए? n sin थीटा इज इक्वल टू ma, राइट? y एक्सिस वाला इक्वेशन मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मेरे को n1 से भिड़ना नहीं है। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा? जो ऑब्जर्वर ऑन द वेज है उसके लिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होएगा? जो ऑब्जर्वर ऑन द वेज है, सपोजिंग यू आर सिटिंग ऑन द वेज, यू आर इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग ऑन द वेज, तो आपको ब्लॉक किधर जाते हुए दिखाई देगा? नहीं, नॉट माइनस है, नो 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 नो, विल यू सी इट गोइंग हॉरिजॉन्टली? हाँ अभिजीत, गुड, यस यस यस।
सो फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द वेज, यू आर सिटिंग ऑन द वेज, आप वेज के ऊपर बैठे हुए हो, तो आपको ये ब्लॉक किधर जाते हुए दिखाई देगा? आपको तो ये ब्लॉक केवल इधर जाते हुए दिखाई देगा ना, नीचे वेज पे ऐसे मूव करेगा ना। तो इसका एक्सेलरेशन सपोजिंग a dash, I will choose an axis like this, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा ma कोसाइन थीटा, और ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा ma साइन थीटा। ये एंगल थीटा रहेगा, सो दिस कंपोनेंट विल बी mg कोसाइन थीटा, this component will be mg sin theta. So along this axis ये ऑब्जर्वर को क्या एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है? Along this axis what is the acceleration seen by this observer? अगर मैं वेज के ऊपर बैठा हूं तो क्या मेरे को ये ब्लॉक ऊपर नीचे कूदते हुए दिखाई देगा वेज के ऊपर? Yeah, it will be zero. It will be zero. So these forces must add up to zero. Acceleration is equal to zero. So I get n plus ma cosine theta is equal to mg cosine theta. And that's it. Solve हो गया question. आप देखो, दो इक्वेशन, दो अननोन। n sin theta is equal to ma, n plus ma cos theta is equal to mg cos theta. n की वैल्यू उठा के a की वैल्यू उठा के n में डाल दो, n की वैल्यू उठा के a में डाल दो, ये हो जाएगा ma अपॉन साइन थीटा प्लस ma कोसाइन थीटा इज इक्वल टू mg कोसाइन थीटा। m कैंसिल हो गया, राइट? a का वैल्यू आ गया मेरे पास, a इज इक्वल टू g कोसाइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। राइट? मैंने एक थीटा एंगल गड़बड़ ले लिया, एक्चुअली आई एम सॉरी अबाउट दिस। मैंने ये वाला थीटा एंगल गड़बड़ ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल से इसका ये एंगल थीटा होएगा। सो this will be ma cosine theta and this will be ma sin theta. Therefore we must have, यहाँ पे आएगा ma sin theta, यहाँ पे आएगा ma sin theta, and therefore यहाँ पे आएगा right, and you can now compare with the answer that we had got before. यहाँ पे हमें constraint equation लगाना पड़ा था, and you will find that this method is very easy. Of course इसमें सोचना ज्यादा पड़ता है, ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, नॉन इनर्शियल रहेगा, इनर्शियल रहेगा, ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, all these things you have to then think. And I've always told you, remember, that if you start to think, steps जो हैं वो छोटे हो जाएंगे, and if you want to do it by brute force method, तो mistakes नहीं होंगी, but method थोड़ा सा लंबा रहेगा, it will be slightly. Okay, चलो, so I will leave you here now. And ये स्वेडो फोर्स है ना बच्चा, ये एमए जो लिखा मैंने, ये स्वेडो फोर्स है ना, ये स्वेडो फोर्स,
लिखा तो है एक्स्ट्रा फोर्स बिकॉज ऑफ. चलो, आई विल लीव यू नाउ. होमवर्क इज होमवर्क इज आपका ये पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा. राइट, प्लीज कंप्लीट. प्लीज कंप्लीट दिस. बुकलेट है आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं. प्लीज कंप्लीट एवरीथिंग नाउ. आई विल 5 है ना कि 6 है? हाँ, फ्रिक्शन अगले क्लास से शुरू करेंगे ना. तो अगले क्लास में आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर दिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद फ्रिक्शन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, चलो, बाय 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 बाय. ये क्या हुआ यार? दो ज़ील एकेडमी क्यों है यहाँ पर? गीता मैम. हाँ सर. हाँ, आपको होस्ट बना दिया. हाँ सर, ओके ओके.